हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे तो हमने 6th क्वेश्चन तक वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के दैट इज 7, 8 एंड 9th हम उसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हाउ कैन वी डू द 7th क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने पहले एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है दैट हाउ कैन यू डू सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लीस्ट फॉर्म आप कैसे निकाल सकते हो किसी भी फ्रैक्शन का। बट टुडे मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई जस्ट सॉल्व दिस फॉर ए बी एंड सी पार्ट एंड यू कैन डू डी एंड ई बाय योर ओन। तो वन वे इज टू जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। जैसे 48/60 अपने पास, ए 48/60, तो अब आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर सकते हो एंड दैट जो एलसीएम है उससे फिर अगर 48 और 60 को डिवाइड करोगे तो आपके पास डायरेक्टली उसका लोएस्ट फॉर्म आ जाएगा, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। बट आई वोंट बी यूजिंग दैट टेक्निक बिकॉज उसमें एलसीएम फाइंड करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं कैंसिल आउट वाला जो टेक्निक है दैट जनरली आई यूज। तो पहले मेरे को देखना होता है इसके अंदर कि कौन सा नंबर ऐसा है विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ 48 एंड 60। तो मैं उसको उससे डिवाइड करूंगा। जैसे मेरे को दिख रहा है यहाँ पे दैट 8 है इसके एंड में और इसके एंड में 0 है, तो मेरे को समझ में आ रहा है दैट आई कैन डिवाइड दीज टू नंबर्स बाय 2। तो 2 2s are 4 and 2 4s are 8 and 2 3s are 6, it will be 30. Now again this 24 and 30 I can divide by 2, so I'll continue. 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 15s are 30. Now I cannot divide this number further by 2. मैं अब आगे 2 से डिवाइड नहीं कर सकता because 12 तो कर सकता हूँ 2 से, but 15 नहीं कर सकता and it should be a common factor between both of them. तो अब कौन सा common factor आ गया? Now the number is 3. तो 3 4s are 12 and 3 5s are 15. अब मेरे पास एंड में क्या बचा? 4/5. now 4/5 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, so I can say that this is the simplest form of 48/60. Now doing the B part of this question, 150/60. Now this is very easy. This part is very easy. Why? Because इसके अंदर एंड में दोनों जगह 0 है. Whenever we are having 0 at the end हम उसको cancel out कर सकते हैं directly. तो I'll just cancel out the 0 with 0 in the down one and the upper one. फिर जो ऊपर अपने पास न्यूमरेटर 15 और नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन अगेन 3 है, तो 3 5s are 15 and 3 2s are 6. So basically the answer which we'll get is 5/2. 5/2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है other than 1, so this will be the simplest form of 150/60. Now doing the C part of this question, 84/98. Yes, I'll do here 84/98. ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 4s are 8, 1 8 2 9s are 18. अब I can see that it cannot go by 2 further, तो मैं 3 से भी नहीं कर सकता because 4 plus 9 is 13. 13 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है। तो what is the next prime factor, sorry prime number, that is 5. 5 से भी नहीं जाएंगे ये दोनों नंबर बिकॉज उसमें एंड में 0 या फिर 5 होना चाहिए फॉर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 5. 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से नहीं जाएगा, बट 7 से चला जाएगा, है ना। तो 7 7s are 49 and 7 6s are 42. So basically the answer which is coming here is 6/7. 6/7 is the simplest form of 84/98. Now moving on to the 8th question. Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils. So we'll just keep on writing this मतलब साथ में ही। तो रमेश के पास कितनी पेंसिल्स थी? I'll write this one here down. रमेश के पास 20 पेंसिल्स थी। नॉर्मली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो यू हैव टू राइट दिस गिवन पार्ट कि क्वेश्चन में दे क्या रखी है, क्या क्या डिटेल्स रखी है, एंड इफ यू मतलब प्रॉपरली अगर आप उनको लिख लो उन डिटेल्स को तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ना। सो शीलू हैड 50 पेंसिल्स, शीलू के पास 50 पेंसिल्स थी एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स, 80 pencils. These are the total pencils these guys are having. Now, after 4 months, what happened? Ramesh used up 10 pencils and Sheila used up 25 pencils. Jamal used up 40 pencils out of the total pencils they were having. So, Ramesh ने कितनी use करी? You could write it used 10 pencils
Shilu used how much? 25, 25 pencils. And what about this Jamal? Jamal used 40 pencils. 40 pencils. What fraction did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his or her pencil. So how can we write this all things in fractional form? Fractional form of pencil used up. For Ramesh, I'll just write it by R. R is equals to, he used 10 pencils out of 20 pencils. So I can write it like this, 10 upon 20. What about this Shilu? Shilu used 25 out of 50 pencils. So I could write 25 upon 50. And what about this Jamal? Jamal used 40 pencils out of 80 pencils. How can I say कि they all used it in equivalent fraction types? मतलब ये कैसे सारे सेम ही फ्रैक्शन के अंदर ने यूज किया है? तो फॉर दैट आई हैव टू फाइंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ईच फ्रैक्शन. तो अगर मैं 10 upon 20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहूँ तो आई कैन जस्ट कैंसिल आउट द जीरो एंड जीरो एट द एंड. So I'll be left with 1 upon 2. What about this 25 upon 50? मैं इन दोनों नंबर को 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. तो 5 5s are 25 and 5 10s are 50 and 5 1s are 5 and 5 2s are 10. So it will become 1 upon 2 again. And what about Jamal? Again I can cancel the 0 0 out. Now 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So it will again become 1 upon 2. So here we can see that all the fractions in its simplest form is coming as 1 upon 2. That's why they all used up pencils in equivalent fractional form. ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है हमें. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise, which is ninth question. हमको मैच अप करना है equivalent fractions and write two more of for each. तो ये two more वाला तो I won't be doing because मैंने पहले explain करा है कि हमें अगर किसी भी fraction का equivalent fraction निकालना है तो how can we do it. तो you can refer for that in the previous videos. मतलब जो मैंने previous videos पहले बनाई है उसके अंदर आप जाके देख सकते हो how to do that part. But in this part we'll be just focusing कि कैसे मैच कर सकते हैं, how can we find the equivalent fraction. तो अगर मैं सारे क्वेश्चंस इधर ही सॉल्व कर दूंगा इसके पार्ट के. तो 0 0 will cancel out here and within 25 and 40 what is common? 5 is common. तो 5 5s are 25 and 5 8s are 40 है ना. So it will match with D. First will match with D. What about the second part? 0 0 will again get cancel out. फिर इसके अंदर क्या common है? 2 9s are 18 and 2 10s are 20. So it will 9 upon 10. 9 upon 10 जो second part है वो आपका E से match हो जाएगा. What about this third one? 0 0 again will cancel out. और 66 और 99 में क्या common है? It is 11. So 11 6 are 66 and 11 9s are 99. फिर 6 और 9 में again common है 3. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So 2 upon 3. So the third will match with A. What about this fourth one? 0 0 will cancel out again. 2 9s are 18. 2 1s are 2. 1 6 2 8s are 16. 9 1s are 9. 9 2s are 18. So fourth will match with C. What about the fifth part? 0 0 will cancel out. 11 2s are 22. 11 5s are 55. So it will be 2 upon 5. So it will match with B. मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया है बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बहुत धीरे समझा चुका हूँ कि कैसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है किसी फ्रैक्शन का. इफ यू स्टिल फाइंड प्रॉब्लम इन एनी पर्टिकुलर पार्ट आप मेरे को बताना. सो जस्ट मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर दैट पार्ट अगेन और मैं उसमें आपको थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कर दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.